ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेवाय नमः। श्री पद्म पुराण अंतर्गते श्रीमद्भागवत महात्म्ये अद्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णा क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका। त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः। परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा। त्वां तदाज्ञापयत्कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरिस्तदा। मुक्तिं दासीं तदौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च। भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सा कृत्वा गता भुवि। कृताद्विपदवा परस्यान्तं महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डामय पीडिता। त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वयाति चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। उपेक्षाता कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव। तथापि चिन्ताममुच्य त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदृशा कोऽपि युगो नास्ति वरानने। तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्। तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवृत्तये। त्वदन्वितास्ते जीवा भविष्यन्ति कलाविह। पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी। न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तया। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा। भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। नृणां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते। कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये। दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्तविनिन्दकः। अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः। अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सूतुवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा। सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। न कदाचिदपि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात्। पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। सूतुवाच तस्या वचः समाकर्य कारुण्यं नारदो गता। तयोर्बोध न मारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्। ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथंश्चित्तोत्थितो बलात्। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसाबुभौ। बकवत्पालितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। क्षुच्छामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ। ऋषिश्चिन्तापरो जाता किं विधेयं मयेति च। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम्। चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। व्योमवाणी तदैवा भून्मारिखे खिद्यतामिति। उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। एतदर्थं तु सत्कर्मं सुरर्षे त्वं समाचर। तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवा साधुभूषणा। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो।
गमिष्यन्ति क्षणाद् भक्ति सर्वथा प्रसरिष्यति इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातिमिति ब्रह्म। नारदुवाच अनया आकाशवाण्यापि गोपत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं केन कार्यं भवेत्तयो क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभाषया। सूतुवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्ता श्रूयते सर्वै किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचनं प्रोचुर्दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूता स्थान्ये तु किन्यन्तस्तु पलायिता हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह। वेद घोषैश्च गीता पाठैर्विबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो न परोस्तीति कर्णे कर्णे जपञ्जना योगिने नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यद् तत्कथं शक्यते वक्तु मितिरैर्मानुषै एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्णयोक्तं दुरासदम्। ततश्चिन्तातुरासोऽथ बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रे तदर्थं कृतनिश्चयः। तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः। नारदुवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्विसङ्गमो भवद् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पञ्चहायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजा सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृतरसोन्मत्ता कथामात्रैकजीविना हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते येषां भूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरे अशरीरगिरोक्तं यत्किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु संवित्सरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नता। कुमारावचु मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायाः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा कृष्णदासानामग्रणीर्योगभास्करा त्वयि चित्रं न मन्तव्यं मक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा ऋषिर्भिर्बहवो लोके पन्थाना प्रकटीकृता श्रमसाध्यश्च ते सर्वे प्राया स्वर्गफलप्रदा वैकुण्ठसाधका पन्था स तु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषा प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्मं तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यद्पुरा तदुच्यते शृण्वस्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधि द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः सत्कर्मसूचकौ नूनं ज्ञानयज्ञस्मृतौ बुधैः श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः सुखादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तेर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्भृकायुः ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्ति प्रेमरसावह प्रतिगेहं प्रतिजनं तथा क्रीडां करिष्यति। नारदुवाच वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालाप तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थं श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघदर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्या शरणागतवत्सला। कुमारावचु वेदोपनिषदां साराज्ञाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा सभूया सम्पृथग्भूतं फले विश्वमनोहरा यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न
स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि माध्यान्तं शर्कराव्याप्रतिष्ठति पृथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसुस्नाते गीतायापि गर्दरि परितापवति व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणस्सद्यो निर्बाधो बादरायणा तत्र मे विस्मया येन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारदुवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकपाना प्रेमप्रकाशकृते शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमहान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्मने कुमार नारद संवादो नाम द्वितीय तत्स श्री गोविंदार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।